Lecture 16 Relationship between Philosophy and Social Sciences Part 2 Philosophy and Education. Education examines the processes, institutions and policies related to teaching and learning. तालीम में सीखने सिखाने के अहमाल, इदारों और पॉलिसियों के मुतल्लिक जांच पड़ताल की जाती है. Education is the dynamic side or the application of philosophy. The plant of education draws its nourishment from the soil of philosophy. Education philosophy का ही इतलाक है, यानी education तालीम वो दरख्त है जिसकी नशोनुमा philosophy के मिट्टी में ही होती है. Philosopher investigate how we acquire knowledge and understanding and how education can foster critical thinking, problem solving and intellectual curiosity. Philosopher इल्म और समझ के मुतल्लिक जानते हैं कि इल्म कैसे हासिल किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे मिल सकती है. इसके अलावा वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि तालीम से तनकीदी सोच, मसाइल को हल करना और फिक्री तजस्सुस को किस तरह फ़रोग़ मिल सकता है. फिलोसोफर एग्जामिन द मोरल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चन अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड द रोल ऑफ एथिक्स इन टीचिंग एंड लर्निंग. फलसफियों का एक काम तालीम में मोरल डायमेंशन को देखना है. तालीम किस तरह इंसान को बाकिरदार बना सकता है, यानी सीखने और सिखाने में जो इखलाकियात का पहलू है उसको फिलोसोफर उजागर करते हैं. जैसा कि तालीम का अव्वलीन मकसद ही इंसान को बाइखलाक बनाना है. प्लेटो emphasized the importance of education in the development of individual and society. सबसे पहले प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में तालीम देने के मुतल्लिक बताया कि माशरे में किसी इंसान को किस तरह तालीम दिया जा सकता है. या इसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड में जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बुनियाद रखी. जॉन डेवी डेवलप्ड द फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ pragmatism which emphasizes the importance of experiential learning, critical thinking and democratic education. जॉन डेवी ने pragmatism के philosophical framework में उसका रुझान तजुर्बाती तौर पर सीखने, किसी चीज को तनकीदी नुक्ताए नजर से देखने और जमहूरी तालीम पर था. Philosophy and economics. Economics emerged from philosophical traditions such as ancient Greek philosophy, Aristotle, Enlightenment thinkers, Adam Smith, and modern philosophical debates on ethics, politics, and human nature. माशियात की बुनियाद भी हमें कदीम यूनानी फ़िलासफ़ी या अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी में मिलती है. मॉडर्न फ़िलासफ़ी में एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकनॉमिक्स की बात की. उनको फादर ऑफ इकनॉमिक्स भी कहा जाता है. वो एक एनलाइटनमेंट थिंकर थे. मॉडर्न फ़िलासफ़र में कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब डास कैपिटल में भी इकनॉमिक्स पर ही बात की है. इसके अलावा इकनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिक्स, एथिक्स और ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है. फिलोसोफर हैव एक्सप्लोर्ड द नेचर ऑफ मनी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक वैल्यूज. दिस हैज लेड टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक फेनोमेना. फलसफी मनी, फाइनेंस और इकोनॉमिक वैल्यू को भी कोच करने की कोशिश करते हैं, जिससे माशरे में मुआशी मोज़ाइक की गहरी समझबूझ मिलती है. फिलोसोफर एग्जामिन द एथिकल डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग इश्यूज लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फेयरनेस एंड द मोरालिटी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस. फिलोसोफर मुआशी फैसला साजी में इखलाकियात का पहलू देखते हैं, जैसे कि मार्क्स और रॉल्स सोशल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन और फेयरनेस की बात करते हैं, जो कि सोशल एथिक्स के दायरे में आता है. फिलोसोफर हैव एग्जामिन्ड हाउ सोशल नॉर्म, इंस्टीट्यूशन एंड पावर रिलेशनशिप शेप इकोनॉमिक आउटकम्स. दिस हैज लेड टू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फलसफी माशरती इक़दार,
اداروں اور پاور ریلیشن شپ اس طرح معاشی نتائج پیدا کرتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، جو کہ ہمیں معاشی ترقی میں اداروں کی اہمیت کی انڈرسٹینڈنگ فراہم کرتی ہے۔ فلسفی اینڈ ہسٹری۔ ہسٹری ایگزامنس پاسٹ ہیومن سوسائٹی ایونٹس اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ۔ تاریخ میں ہم قدیم انسانی معاشروں، واقعات اور ثقافتی ترقی کو دیکھتے ہیں۔ Philosophers often engage with historical texts and ideas to inform their own theories۔ فلسفی اپنے نظریات کو بیان کرنے کے لیے تاریخی ٹیکسٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ Historical events such as wars, revolutions and social movements have shaped philosophical debates and ideas۔ Philosophers often respond to and reflect these events in their work۔ تاریخی واقعات جیسے کہ جنگ، انقلابات اور معاشرتی تحریکیں فلسفیکل آئیڈیاز کو شیپ کرتے ہیں۔ فلسفی اپنے کام میں اکثر ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، ان کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کو ترتیب دے کر ہی نئے تھیوریز بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Some influential philosophers of history are Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger and Foucault۔ These philosophers have significantly influenced the relationship between philosophy and history, shaping our understanding of historical development, human existence and the complexity of power and knowledge۔ Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Foucault ایسے فلاسفر رہے ہیں جنہوں نے ہسٹری کو سمجھتے ہوئے یا ہسٹری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اپنی فلسفیکل تھیوریز دی ہیں۔ Both philosophy and literature explore fundamental questions about human existence, morality, ethics and the human condition۔ فلسفہ اور ادب دونوں کا کام انسانی وجود، اخلاقیات اور انسانی حالات پر سوال کرنا ہے۔ Philosophers always employ literary devices such as metaphor, allegory and narrative to convey complex philosophical ideas and concepts۔ فلسفی اکثر اپنے فلسفیکل آئیڈیاز کو بیان کرنے کے لیے لٹریری ڈیوائسز کا سہارا لیتے ہیں۔ میٹافور، الیگری اور نریٹو کو یوز کر کے وہ پیچیدہ فلسفیکل آئیڈیاز کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے پلیٹو نے اپنی نظریہ علم کو سمجھانے کے لیے ایلیگری کا سہارا لیا تھا اور اس کے ذریعے literary works often explore philosophical themes such as the nature of reality, the meaning of life and the human condition۔ ادب میں جو کام ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فلسفیکل تھیم لازمی ہوتی ہے، یعنی ادب کسی فلسفیکل تھیم پر ہی کام کرتی ہے کہ حقیقت کو جاننا یا زندگی کے معنی کو جاننا یا انسانی حالات کو جاننا۔ Philosophical ideas have influenced various literary movements such as existentialism, romanticism and realism۔ ادب میں جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ فلسفیکل آئیڈیاز سے ہی انفلوئنس ہوتی ہیں، یعنی ایگزسٹنشلزم، رومانٹسزم، ریئلزم یہ ادب کے بڑے تحریک رہے ہیں جو اصل میں فلسفی ہی ہیں۔ Both philosophy and literature rely on imagination to explore new idea, concept and perspective۔ فلسفہ اور ادب دونوں امیجنیشن کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے نئے آئیڈیاز، کانسیپٹ اور کسی بھی نقطۂ نظر کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Some philosophers like Plato, Nietzsche and Sartre have written philosophical texts that are also considered literary masterpieces۔ بعض فلسفیوں جیسے پلیٹو، نیٹشے، سارتر ان کا کام ادب میں بھی شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔